Morning everyone. Now we are discuss about the first chapter of civics class 7th डेमोक्रेसी. इसको हिंदी में लोकतंत्र भी कहते हैं. देखिए, डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द रूल ऑफ कॉमन पीपल. डेमोक्रेसी जो है कॉमन पीपल सामान्य व्यक्ति के शासन को इंडिकेट करती है. डेमोक्रेसी वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेमोक्रेटोस. ये एक लैटिन वर्ड है डेमोक्रेटिया या डेमोक्रेटोस, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है. एक होता है डेमोस. डेमोस का अर्थ होता है कॉमन पीपल, और दूसरा क्रेटोस. क्रेटोस मीन्स होता है पावर, अर्थात ऐसा सिस्टम जिसमें कॉमन पीपल के हाथ में पावर होती है उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं. सेकंड पॉइंट आते हैं. डेमोक्रेसी के रेफरेंस में पूर्व प्रेसिडेंट यूएसए मिस्टर अब्राहम लिंकन जी की डिफिनेशन है. डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन. तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए होती है, और वो सरकार जो है आप कह सकते हो कि जनता से निर्मित होती है. पॉइंट नंबर थर्ड, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसका एग्जांपल आप ग्राम सभा या विलेज पंचायत कर सकते हैं. एंड सेकेंड, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच लाइज ऑन द ए लार्ज एरिया. इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जिस एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी में किसी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स एग्जाम्पल बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट आते हैं, व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. There are several form of government, just like in some areas are monarchs exist. Monarchs को हम लोग राजतंत्र कहते हैं. Today in some countries governed by the king or queen. आज भी कई देश में राजा और रानी का शासन है. This system is known as monarch system. And second, in some country dictator exist. A people capture the all power in his hand and exist the absolute power. तानाशाह वो व्यक्ति होता है जो पूरी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और आप कह सकते हो मनमानी करता है. तीसरा, लोकतंत्र. इन सम कंट्रीज थ्योरोक्रेसी गवर्नमेंट एग्जिस्ट. थ्योरोक्रेसी गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पे धर्म पे आधारित सरकारें होती हैं. ऑन दैट कंट्रीज रिलीजन आर डोमिनेंट. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वाई द डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ट बिकॉज इन हियर पीपल आर फ्री, देयर राइट्स आर इनफ, एंड दिस पीपल change their government according to their wishes, and government also responsible for the development of the common people. These point makes this system strong, and democracy is very favorable for the every country. Now we are discuss about India. India is a democratic republic country. Why? It is major question. You say in the past in India there were a lot of kingdoms, a lot of king and queens. They govern some parts India, and they are monarchs. They do if they want, just or unjust. But after the 1950, when India became independent, a new constitution formed, and our country becomes a democratic republic.
In every state and our country, a government is formed by the common people, the people who cross the age of 18 and the citizen of India. They participate in election held every after 5 years. They form their representatives, and these representatives form the government, and government is also responsible for the people. In here, government cannot ignore the public opinion. If government ignore it, if government careless about the people, in the next election people change that government. You see that in a democracy rights are enough, our duties are important. Democracy provides a lot of features, just like equality. Every persons are equal if they belong any caste, culture, creed. Nobody is above. Equality, we are equal. Of course, in our country, caste system exists, untouchability system was exist, and a lot of discrimination was existed, but not today. When we accepted our new constitution provide the equality to the all the people. First point here, what is democratic society? Democratic society means if they are male or female, if they are rich or poor, if they are literate or illiterate, all people are politically equal, and every person cast one vote in the election. There is no any type of discrimination obtained by the government. So it is a unique feature to democracy. Second thing, economic democracy. Economic democracy implies that all members of the society should have equal economic opportunities. It means in the beginning you say that Varna system exists, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, their tasks were decided, but not today. It is condemned because every person are free to adopt their occupation. If they are brilliant, they obtain a good job. If interested, they start a business. No any type of exploitation may be obtained by the other. कोई व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है. If anybody do it, our constitution, our government determine them and resolve their problems. And you see here, the every persons have equal opportunities. सभी को बराबर का अवसर है for their earning, for complete the examination, for obtain the job. If they are Indian, they participate that sector and obtain job, started business or other things. In here, India is a republic because head of the country का head कौन होता है? President. Head of the country is elected for a particular period. After that period, next election will be held and new president may be elected. अब ये कह सकते हैं कि भारत गणराज्य इसलिए है क्योंकि जो यहाँ का अधिनायक है, हेड है, वो परमानेंट नहीं होता है, वो एक निश्चित पीरियड के लिए चुना जाता है. आफ्टर दैट पीरियड न्यू प्रेसिडेंट में बी इलेक्टेड. सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. फर्स्ट, democracy, we are free, we are equal, no, we have fundamental rights,
we form the government, we change the government, and government is also responsible for us. So democracy is a best form of government in the world. That's all.